मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ वीट एकेडमी का, जिन्होंने आज सबको यहाँ पर जमा किया और जिन्होंने इतना अच्छा मकसद को डिस्कस करने के लिए हम सबको यहाँ पे बुलाया है। अक्टूबर का महीना जब भी आता है तो पूरी दुनिया में इनफैक्ट हम लोगों के माइंड में एक चीज़ बहुत ज़्यादा आती है और हम लोग सोशल मीडिया पे, टीवी पे हर जगह देख रहे होते हैं, इट्स ऑल अबाउट ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस। तो ऑब्वियसली इस महीने को मखसूस कर दिया गया इस एक डिज़ीज़ के लिए जो मैं कहूँगी, और आज हम सब लोग यहाँ पर इसी अवेयरनेस के लिए मौजूद हैं। मैंने अक्सर नोटिस किया है हमारी कंट्री में, ख़ासकर पाकिस्तान में, कि लोग अभी भी इस डिज़ीज़ को समझते हैं कि क्यों हम डॉक्टर के पास जाएं, क्यों जाके चेक कराएं, ओ माय गॉड ये क्या हो गया है हमें, यू नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आप लोगों के घरों में होती हैं। हम लोग नहीं हैं यूज़ टू इन चीज़ों के लिए। हमारे यहाँ आज भी इस चीज़ को बुरा समझा जाता है कि हमें गायनेकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना चाहिए। यू आर नॉट अ मैरिड वुमन, तुम सिंगल हो के गायनेकोलॉजिस्ट के पास क्यों जा रही हो? सो आई थिंक दिस इज़ द थिंग जो मैं बोलना चाहती थी सबको एज अ पर्सन, एंड आई एम सो ऑनर्ड टू बी द पार्ट ऑफ दिस वीट एकेडमी ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए। लड़कियां जो हैं वो क्यों इन चीज़ों में शाय फील करती हैं। हमें अपनी ज़िंदगी में अपने आप को 5-10 मिनट देने चाहिए ताकि हम जाके अपना चेकअप करा सकें, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। सो आज हम सब लोग यहाँ पे इसलिए ही जमा हुए हैं, एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इवेंट इज़ कि आप लोगों को यहाँ पर हम एक सर्वाइवल से मिलवाने वाले हैं जो ये फेस कर चुकी हैं। शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन एंड आई एम श्योर आप लोग उन्हें जानते होंगे। शी इज़ अ वेरी फेमस राइटर, फिल्म मेकर एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर ऑल्सो, अस्मा नबील, प्लीज़। थैंक यू। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर आज डॉक्टर कौसर भी मौजूद हैं। शी इज़ द वन आप जिनसे बात कर सकते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछ सकते हैं। यू नो वी हैव सो मैनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस थिंग्स कि ये कैसे होता है, क्या चीज़ होती है जिससे हमें पता चल जाता है कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए या फिर टेस्ट कराने चाहिए, समथिंग लाइक दैट। तो आप उनसे जान सकते हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर डॉक्टर कौसर। थैंक यू। एंड वी हैव द लास्ट पर्सन हेयर जिनकी वजह से आज हम सब लोग यहाँ पर जमा हैं। ओके, सो द नेम इज़ हुमायूं फारूक इज़ द पर्सन, RB मार्केटिंग डायरेक्टर इज़ हेयर, जो आप लोगों को बताएंगे कि उन्होंने ये क्यों इस तरह की चीज़ डिसाइड करी कि करना चाहिए लड़कियों के लिए, और इस तरह के कुछ इवेंट्स करने चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ कंट्री में ये चीज़ें नहीं होती हैं। एंड आई एम सो हैप्पी कि वीट ने इस तरह की इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए हैं और हम लोग कर रहे हैं। सो प्लीज़ वेलकम हुमायूं फारूक। Okay, Assalamu alaikum everybody. Humayun Farooq. I'm the Director Marketing for Reckitt Benckiser Health Pakistan. बहुत मुझे खुशी हो रही है, एक बहुत क्या कहते हैं पॉजिटिव, पिंक पॉजिटिव एनर्जी एज आई कॉल इट यहाँ पर मौजूद है। मुझे एक्चुअली यहाँ पे नहीं होना चाहिए, सिर्फ आप ख़वातीन के लिए। लेकिन ये कि आई एम श्योर दैट यू नो दिस विल बिकम ए वेरी इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म टुडे। वीट जो है वो पाकिस्तान की लीडिंग ग्रूमिंग ब्रांड तो है ही है, लेकिन वीट एकेडमी जिसके बारे में शायद हम इतनी बात नहीं करते और हमें शायद ज़्यादा बात करनी चाहिए, वो वीट एकेडमी क्या है। सबसे पहले वीट एकेडमी इज़ द पर्पस लेड फॉर वीट ब्रांड। जिस तरह से वीट ख़वातीन की ग्रूमिंग के लिए बात करती है, बिल्कुल उसी तरह से वीट एकेडमी ख़वातीन की पर्सनालिटी ट्रेट्स को ग्रूम करने की बात करती है। वी बीन डूइंग दिस प्रोग्राम्स अक्रॉस पाकिस्तान फॉर एटलीस्ट अ डेकेड, एंड जिसके अंदर हम क्या कहते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पर्सनालिटी ट्रेट्स के पिलर्स हैं जिसके ऊपर हम ख़वातीन को ग्रूम कर रहे हैं। अब चूँकि मैंने बात की है कि जी हम ख़वातीन की ग्रूमिंग ब्रांड लीडिंग हम क्या कहते हैं लीड करते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो हम ऑब्वियसली ख़वातीन के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठी करते हैं। उस इन्फॉर्मेशन के वक्त को इकट्ठा करते वक्त हमें एक चीज़ समझ में आई कि पाकिस्तानी औरत जो है वो एक बहुत सैक्रिफाइस पर यकीन रखती है, वो बहुत कुर्बानी देना चाहती है। वो चाहे अपने हस्बैंड के लिए कुर्बानी देना चाहती है, वो अपने बच्चों के लिए कुर्बानी देना चाहती है। शी वर्क्स ऑल्सो बट एट द सेम टाइम वो कुछ गिल्टी फील करती है, और इसी वजह से वो अपना ख्याल नहीं रखती समहाउ। और हमारे लिए एक्चुअली ये चीज़ जो है वो हमारे लिए तकलीफ है, बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि अगर सिर्फ अपना थोड़ा सा वो ख्याल रख पाए तो वो बहुत सारे ख़तरनाक डिजीज़ से बच सकती है। यही चीज़ मुझे लीड करती है अपने आज के टॉपिक पे
जो कि है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस. सो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस, बट ब्रेस्ट कैंसर पाकिस्तान में ख़वातीन की डेथ का सेकंड सबसे बड़ा कॉज है. एंड एक्चुअली ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको अगर आप अपना एक नॉर्मल चेकअप, जो कि मेरा ख्याल है अगर 2 महीने में भी एक बार आप अपने लिए 10 मिनट निकाल कर भी कर लें और इसके बारे में थोड़ी अवेयरनेस अपने आसपास रखें, तो आप एक इतने बड़े ख़तरे से अपने आप को बचा सकती हैं. सो आज की जो टॉक है, आज की जो पैनलिस्ट हैं, वो आज आए हैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में अवेयरनेस देने के लिए. ये हमारी तरफ से एक कोशिश है कि हम ख़वातीन तक अपने इस पैगाम को पहुंचाएं. The reason we've invited all of you guys is that you guys are the opinion leaders for us, and it is very important कि आप लोगों के channels के through हम जितनी ज़्यादा ख़वातीन को reach कर पाएँ, उनको हम reach कर पाएँ. We have 2 very inspiring ladies over here, actually 3, and all 3 of them, you know, are stalwarts in whatever they do. Asma के बारे में मैं ये कहूँगा कि actually I met her in one of those events that we had. And I heard her story and I was so touched, and I told her then, I said, you know what, this is not the last time that we are meeting, so here she is again. And Dr. Kausar, obviously, I met her at a breast cancer awareness talk, and I realized इन्होंने ही मुझे सारे facts बताए जो मैं आपको अभी discuss कर रहा हूँ आप लोगों के साथ. And I realized कि, you know, we have a brand, we can help the society, so why not? So that is why they are here today. Please ask away, whatever they tell you, please ensure that on your respective channels you spread this information, because हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जितना ज़्यादा हम इस information को spread करेंगे, शायद हम बहुत सारी ख़वातीन को इस मुश्किल में पड़ने से बचा लेंगे. Thank you so much. Thank you so much, हुमायूं. And अब हम जानना चाहेंगे obviously अस्मा नबील से, जिन्होंने ये सारी चीज़ें फेस की हैं, किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया इन सब चीज़ों को लेके, हम उनसे बात करते हैं. I think this is the first time I've played something like this on a public platform. Sorry, मैं खुद थोड़ी emotional हो गई हूँ आज. You were talking about my journey. I think a lot was there. जो मैंने अभी video यहाँ पे share की है. It was not a very easy time for me. ये 10 slides की video बनाना and उसके पीछे music से थोड़ा सा expression डाल देना, you know, it's very easy right now. 2 years of my life were extremely tough because in 2012 I was diagnosed with 4th stage
and it was a very very sudden thing for me because एक तो हमारी फैमिली में किसी को भी नहीं था, तो ये जो मिथ है जिस पे हम आगे डॉक्टर साहब भी बात करेंगी कि फैमिली में होता है नो नानी, नो खाला, नो परनानी, नो सिस्टर, नो वन. सो आई कॉल माई सेल्फ द फर्स्ट लकी वन इन माई फैमिली जिसको ये हुआ था. एंड लकी इसलिए कहती हूँ क्योंकि अगर लकी नहीं होती तो यहाँ नहीं बैठी हुई होती. सो दैट्स वाई आई फील कि वो जो सब कुछ हुआ है वो इस वजह से हुआ है बिकॉज आई हैड टू कम हियर एंड आई हैड टू डू ऑल दिस व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. सो विद एवरी नेगेटिव देयर इज़ अ पॉजिटिव विच वी नॉर्मली डोंट सी. एंड 2 सर्जरीज हुई. एक सर्जरी हुई, उसके बाद पता चला कि आई एम स्टिल नॉट कैंसर फ्री. एंड देन सेकेंड सर्जरी मैंने अपनी करवाई जो कि मिस्टेक्टमी थी. वो हो के एंड देन आई हैड 18 राउंड्स ऑफ कीमो विच इज़ अ वेरी वेरी आई थिंक सर्जरी से ज़्यादा मेरा टफ़ टाइम जो था वो कीमो था बिकॉज़ मैं वो वाली खातून थी जो जब मेरे दोनों बच्चे हुए और उनकी मेरी डिलीवरीज हो रही थी तो मैं कैन्यूला लगवाने से भागती थी और मैं डॉक्टर से प्रॉमिस करवाती थी कि सर्जरी के फ़ौरन बाद कैन्यूला डाल देंगे आप मेरा. सो माय सर्जन वाज रुफीना सोमरो एंड आई रिक्वेस्टेड हर. आई सेड कि जिस दिन मेरी सर्जरी होगी एक तो सबसे पहले सुबह करेंगी आप मेरी सर्जरी और उसके बाद जब मैं वापस आऊँगी तो मेरे होश में आने के बाद आप मुझे ओरल मेडिकेशन पे कर देंगी. दो इट डिडंट हैपन बट एटलीस्ट OT में ले जाने के लिए शी प्रॉमिस्ड मी एंड शी वाज लाइक या ऐसा ही होगा, कोई मसला नहीं है. सो आई वेंट देयर. थोड़ा डिफ़िकल्ट था व्हेन इट स्टार्टेड एंड सर्जरीज़ के बाद काफ़ी टफ टाइम आया. एंड येस देयर वाज अ टाइम जिस वक्त आफ्टर माय 6th कीमो 7th कीमो तक मैं ऑफिस जा रही थी. आई वाज वर्किंग एंड आई वाज ट्राइंग टू लीड अ नॉर्मल लाइफ विच इज़ आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी पर्सन हु इज़ थ्रू टफ फेज़ ऑफ द लाइफ बिकॉज हम लोगों को ख़ुद भी डंप होने का बहुत शौक होता है. हम लोगों को हमारे इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स हमें डंप करने की कोशिश करती हैं या हमें डीमोटिवेट करने की कोशिश करती हैं. बट आई नेवर गॉट डीमोटिवेटेड. आई थिंक इट ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ मे बी अल्लाह वॉज रियली काइंड इनफ विद मी. बहुत सारे लोगों के साथ शायद नहीं इतना ज़्यादा चीज़ें हो रही होती बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा आई थिंक एक डिफरेंट तरह की जर्नी ये रही है. Very spiritual, very coming back to my faith and coming out as a very strong woman. जब कीमो शुरू हुई तो अगेन मैं ये नहीं कहूँगी कि प्रॉब्लम नहीं आई. कीमो स्टार्ट हुई, 6th कीमो तक मैं ऑफिस गई. 6th कीमो के बाद there was a very very serious reaction of a medicine and I nearly saw death. मैंने लिटरली कलमा पढ़ लिया था एंड मुझे सीजर्स के अटैक्स आए एंड मुझे रात को रश किया गया हॉस्पिटल एंड 3 days ऑफ माई लाइफ आई विल नॉट कॉल इट अ कोमा और समथिंग बट 3 days आई वॉज अनकॉन्शियस एंड टिल डेट आई डोंट रिमेंबर दोज 3 days ऑफ माई लाइफ. एंड 3 दिन के बाद जब मैंने आँख खोली थी पहली दफ़ा तो द फर्स्ट पर्सन आई सॉ वॉज माई सन हु वॉज 4.5 एट दैट टाइम एंड ही वॉज जंपिंग इन happiness and he was here and there, mama उठ गई, mama उठ गई, mama उठ गई. And I had a small, a very weak smile on my face and then the rest of the world appeared, in front of me, जो मेरी पूरी दुनिया थी. And that day my perspectives, my life, my thought process, everything changed. And because वो कहते हैं ना कि जब आप थोड़ा सा भी मौत को करीब से देख के आ जाते हैं तो आपको फिर लग पता जाता है कि हुआ क्या है एंड आपको उस वक्त पता चलता है कि जो लाइफ है वो एक्चुअली वो लाइफ नहीं है और जो लाइफ में भी शायद हम जिस लाइफ के पीछे भाग रहे होते हैं दैट्स नॉट द लाइफ. सो फिर उस दिन जिस दिन मैं वापस आई हूँ तो मुझे पता नहीं क्यों ये फीलिंग आई कि इट्स माई रीबर्थ एंड अल्लाह हैज़ गिवन मी अनदर लाइफ. मैं चली गई थी. आई वॉज समवेयर एल्स. आई वॉज नॉट इन दिस वर्ल्ड. आई वॉज नॉट हेयर फॉर दोज 3 days. सो मैं जा भी सकती थी बट इफ आई हैव कम बैक सो आई नीड टू स्टार्ट लिविंग अ मोर मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल लाइफ. मे बी मीनिंगफुल मैं पहले भी गुजारी थी. आई वॉज इन एडवर्टाइजिंग. आई वॉज एट द पीक ऑफ माई करियर जिस वक्त मेरी ये डायग्नोज हुआ है. आई वॉज क्रिएटिव हेड इन वन ऑफ द लीडिंग एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एंड कोई चीज़ मिसकैलकुलेटेड नहीं थी लाइफ में. कुछ भी गलत नहीं लग रहा था एंड ऑल ऑफ अ सडन जब आपका एक कोलैप्स आता है तो या तो आप यहाँ चले जाते हैं या आप वहाँ चले जाते हैं. एंड आई एम वेरी लकी कि मैं इधर आ गई हूँ ऑन द राइट साइड एंड अ वेरी पॉजिटिव साइड बिकॉज जिस दिन वापस आई हूँ होश में उस दिन बस आई प्रॉमिस्ड अल्लाह के दिस इज़ अ रीबर्थ एंड आई नीड टू डू समथिंग मोर देन व्हाट आई वाज डूइंग. एंड आफ्टर दैट आई थिंक
वहाँ से यहाँ तक जो मैं यहाँ बैठी हुई हूँ आज, बस ये हो रहा है। एंड मे बी आई डोंट कॉल माई सेल्फ अ वेरी रिलीजियस पर्सन और एनीथिंग, बट मेरा फेथ बहुत स्ट्रांग हो गया इस सारी बात के बाद। एंड माई पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ चेंज्ड कम्प्लीटली, यू नो। एंड जो हम I was a very thankless person actually. Actually we all are. We are very thankless. हमको अंदाज़ा नहीं है कि हम ये छोटी चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द, हम कितना यू नो ब्रूटली उन चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं इन आवर डेली लाइफ। बट आई रियलाइज बिकॉज ये पानी की बॉटल यहाँ पड़ी हुई है, इसका एक लेना वाज लाइक अ टास्क फॉर मी, बिकॉज जब मेरी कीमो हो रही थी तो मेरे पूरे मुंह के अंदर, मेरे गले के अंदर सारे ब्लिस्टर्स थे, तो मुझे बाकायदा खाना सुन करके दिया जाता था। देयर वाज अ मेडिकेशन जो मुझे दी जाती थी, तो मेरा मुंह सुन हो जाता था, फिर मुझे कुछ फीड कर दिया जाता था और मुझे कुछ पता नहीं चलता था, बट मुझे सिर्फ ये पता होता था कि मुझे एनर्जी आ रही है। सो जिस दिन मैंने फ़र्स्ट टाइम पानी को पहली दफ़ा दोबारा एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ट्राई किया है, उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि अल्लाह हम किस जोन में चल रहे होते हैं। एंड यू नो इट्स वी आर सो थैंकलेस, यू नो। हम छोटी छोटी चीज़ों पे रोज़ सुबह हम उठते हैं, लाइट नहीं है, ड्राइवर चला गया, ये नहीं है, वो नहीं है, हम एक अजीब जोन में क्रिप कर रहे होते हैं डेली। ऑल दोज पर्सपेक्टिव्स चेंज इन माई लाइफ एंड आई स्टार्टेड स्ट्रगलिंग टू डू समथिंग डिफरेंट जो मैं कर रही थी। मैंने एज अ पर्सन तो मैं ऑटोमेटिकली चेंज हुई आफ्टर माई आई थिंक लाइफ थ्रेटनिंग एक्सपीरियंस। एंड लाइफ की मीनिंग ज़्यादा समझ आ गई, लाइफ को आई थिंक टेक केयर करना ज़्यादा समझ आ गया। एंड अबव दैट मैंने खुद स्ट्रगल करना शुरू कर दिया कि आई नीड टू डू समथिंग मोर देन व्हाट आई एम डूइंग। एंड उसके बाद आई थिंक इन टर्म्स ऑफ माई प्रोफेशन, यू नो, द राइटिंग वाली चीज़, बिकॉज आई यूज़ टू राइट लाइक शॉर्ट स्टोरीज व्हेन आई वाज ऑन द क्रिएटिव साइड। तो कमर्शियल्स लिखते थे, छोटी छोटी कहानियाँ लिखते थे, एंड देयर वर फ्यू फ्रेंड्स हु वर पुशिंग मी कॉन्स्टेंटली कि यू आर जस्ट नॉट डूइंग इट, यू नो, यू हैव टू डू इट, यू कैन डू इट। सो वो स्ट्रगल को मैंने और बढ़ा दिया। एंड I seriously feel blessed because I think पहला ड्रामा I wrote खुदा मेरा भी है, which was on a transgender child, ARY पे आया था। I wrote खानी, which was like a blockbuster, समझ नहीं आया हुआ क्या है। Then I wrote बांदी, I wrote दिल क्या करे, I wrote one of the films which is मान जाओ ना, I wrote सुर्ख चांदनी जो भी acid survivors के ऊपर एक कहानी आई है। And there are a lot of other projects which will inshallah hit the screen soon. It's happening now, and I think it's happening because वो जो मैं faith की बात कर रही हूँ, वो faith बड़ा strong हो गया। So मुझे नहीं लगता जो मैं लिख रही हूँ वो मैं लिख रही हूँ, वो कहीं से आ रहा है और वो हो रहा है, because I feel the chosen one now and I feel very privileged because इतनी तकलीफ़ के बाद, वो जो हमारे रिलीजन में भी एक बात आती है ना कि तकलीफ़ के बाद आप अगर तकलीफ़ को अच्छी तरह सह जाएँ तो आपके लिए बड़ा पॉजिटिव जोन खुल जाता है। तो हम हमेशा तकलीफ़ के टाइम पे वो पॉजिटिव को तो हमने छोड़ा हुआ होता है, हम रो रहे होते हैं, अल्लाह वाई मी वाई मी वाई मी। आई थिंक मेरा प्लस ये था, आई नेवर आस्क्ड अल्लाह अल्लाह वाई मी, आई एक्सेप्टेड इट, एंड दैट एक्सेप्टेंस इज समथिंग दैट I would like every woman and every man to understand that this acceptance is very, very important. Whatever time is coming, just accept it because that is your time now. So live in that now. Stop cribbing about it. You never know आगे क्या रखा हुआ है। मैं जिस वक्त कलमा पढ़ के गई थी लियाकत नेशनल, मुझे नहीं पता था कि आज मैं यहाँ बैठी हुई होंगी, but it's happening and it's real, it's for real. मैं कभी और मोटिवेशनल स्पीकिंग पे गई तो and one of the aunties she came and she touched me like this and I was like, auntie, what are you doing? I was in US. And she said, are you for real? I said, yes auntie, I am for real. What is wrong with you? She said, तुम कैसी बातें कर रही हो, ऐसा कोई नॉर्मल इंसान बातें नहीं करता है। And I said, when you see like you go through so much, you know, आप कभी कभी नॉन रियल जोन में चले जाते हैं, but actually that's the real zone, you know. So that's something that मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ, मैं जहाँ कहीं भी बात करती हूँ, I think that's the most important thing to understand कि इस वक्त क्या है। So that is like one part of the health and everything, जो सारी चीज़ें हैं। I think as a woman, मेरा ख्याल से आपका होना बहुत अच्छी बात है। आपने जो स्पीच यहाँ शुरू की वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हम में से कोई बोल रहा है, बिकॉज मुझे अपनी मिस्टेक ये लगती है, एंड जो मैं बात करना चाहूँगी थ्रू दिस प्लेटफॉर्म टू द फीमेल्स, कि हम सब रिलेशनशिप्स के पीछे, दुनिया की चीज़ों के पीछे, अम्मी, घर, मियाँ, बच्चे, फैमिली, भाई, मैं कौन हूँ मैं भूल जाती हूँ। यू नो, मुझे मेरी जॉब भी है, मेरा काम भी है, मुझे घर भी करना है। फीमेल्स
आई थिंक अल्लाह की तरफ से दे आर मल्टीटास्कर्स, बाय डिफ़ॉल्ट दे आर मल्टीटास्कर्स. सो वो उस चक्कर में कभी कभी बहुत प्रॉब्लम में आ जाती हैं, बिकॉज वो मल्टीटास्किंग में सब कुछ कर रही होती हैं, बट दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स. And that is something that I always try to, you know, promote and educate females, that is one thing that I did wrong in my life. मुझे आ रहे थे हल्के हल्के फीलिंग्स, मुझे दे रहा था कहीं ना कहीं से अल्लाह. मुझे बहुत ऑन एंड ऑफ बुखार रहना शुरू हो गया था व्हेन आई वाज इन एडवर्टाइजिंग. सो मुझे कभी एक हफ्ते बाद फीवर हो जाता था, कभी मुझे 15 दिन बाद फीवर का वो आता था. एंड अगैन हम सारे, सॉरी डॉक्टर साहब, हम आधे नहीं पूरे डॉक्टर हैं, हमें कुछ होता है, हमें पता होता है हमें पैनाडॉल खानी है. एंड मैं खुद ही अपनी सेल्फ असेसमेंट पे चल रही थी कि अच्छा हाँ मैं बहुत थक जाती हूँ, मेरी पिच चल रही है, क्लाइंट ने बहुत टेंशन दी हुई है, ब्रीफ सही नहीं आ रही है, यू नो ऑल दोज थिंग्स. सो नहीं सारी सेल्फ असेसमेंट कि हाँ अच्छा मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, बच्चे बहुत छोटे हैं, मैं रात को उनकी टेक केयर करती हूँ, सुबह मैं उठ के ऑफिस चली जाती हूँ. बट आई नेवर थॉट अबाउट इट वंस कि मैं एक दफ़ा जाके डॉक्टर से चेक करवा लूँ, बिकॉज अपने लिए मेरे पास टाइम नहीं था. हाँ चली जाऊँगी, हाँ क्या हो जाएगा, ओके सही है. वी नेवर थिंक अबाउट दीज थिंग्स कि मेरा बच्चा बीमार होगा मैं छोड़ दूँगी उसको, मैं दुनिया के सारे काम छोड़ के मैं कहूँगी नहीं सॉरी आपने मुझे जॉब से निकालना है, आप निकाल दें, मेरा बच्चा उसका अपॉइंटमेंट है, बड़ी मुश्किल से मिलता है इन वाले डॉक्टर साहब का अपॉइंटमेंट, सो मैं लेके जा रही हूँ. यू नो, सो ये वाला एटीट्यूड ख़वातीन में अपने लिए भी होना चाहिए कि आई नीड टू थिंक अबाउट माई सेल्फ. बिकॉज अगर मैं वो 2 साल से मुझे वो साइंस आ रहे थे, अगर मैं उस साइन पे मे बी 2 साल पहले एक्टिवेट हो जाती तो शायद सेकंड स्टेज होता, शायद फर्स्ट स्टेज होता, शायद मुझे 18 कीमोज ना लगती, शायद मुझे 5 लगती. यू नो सारा प्रोसेस, मैं ये नहीं कह रही कि प्रोसेस नहीं होता, बट प्रोसेस कम हो जाता. इन टर्म्स ऑफ माई ओन जो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रॉब्लम था वो भी कम हो जाता. एंड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली ऑल्सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड के हम 100% पेमेंट पे इलाज करा सकते हैं, सब कुछ है, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनके पास ये प्रिविलेजेस नहीं हैं. उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि शुरू में ही पता चल जाए, और वो पता चलने का रीज़न सिर्फ यही हो सकता है कि आप अपने लिए हर महीने 5 मिनट निकालें, अपने आप को टाइम दे दें, अपना सेल्फ असेसमेंट कर लें. एंड अगर आप 35 एंड 35 प्लस हैं तो आप अपना मेमोग्राम करा लें. व्हाट्स द रॉकेट साइंस इन दिस? सो वो जो 2 साल मैंने अपनी लाइफ के इतने टफ गुजारे, वो सिर्फ उस 2 साल के इग्नोरेंस पे गुजारे, जो मैं अपनी सेल्फ असेसमेंट ये करती है कि हाँ ठीक है सही है, मैं तो बहुत काम करती हूँ, मैं तो बहुत हार्ड वर्कर हूँ. कोई कुछ नहीं देता एंड में. एंड में आप अकेले ही बिस्तर पे पड़े हुए होते हैं और कुछ नहीं हो रहा होता है. सो आई हैव सीन द टफेस्ट इन माई लाइफ, एंड इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द फीमेल्स, एंड जिन प्लेटफॉर्म्स पे जा रही है, जहाँ बात जा रही है, इवन इन योर हाउस होल्ड्स, यू नो यू हैव लाइक योर हेल्प, जो आपके घर में मेड्स होती हैं या आपकी हेल्प के लिए जो घर पे लोग ख़वातीन होती हैं. यू गाइज आर, आई एम लकी इनफ, आई एम अलाइव सिटिंग हियर टॉकिंग टू यू गाइज आर लकी इनफ टू हेयर आउट व्हाट वी आर हेयर टू टॉक अबाउट. यू नो जो आपके घरों पे लोग हैं उनको ये बातें बताने वाला भी कोई नहीं. और हमारा फोकस जो हम समीना अलवी के प्लेटफॉर्म से हम दोनों हैं, एंड हम लोग जो बात कर रहे होते हैं तो इट्स, हम ज़्यादातर लोअर एससीसीज में जाके बात करें, बिकॉज उन औरतों को बताने वाला कोई नहीं है. सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि यू गो एंड टॉक टू देम, and talk to your younger sisters, talk to your daughters, to all the young, you know, mothers. मैं डॉक्टर साहब को बोलने का मौका ही नहीं दे रही हूँ. मैं इसमें एक चीज़ बोलना चाहूँगी, सॉरी आई एम कटिंग यू. आपने जैसे बताया कि जब आपने 2 साल इसको इग्नोर किया एंड देन 2 साल बाद आपको पता चला कि तो क्या सिम्टम्स आपके साथ होते थे उन 2 सालों में जिनको आप इग्नोर करती थी बहुत ज़्यादा? आई टोल्ड यू मुझे बुखार होता था, बस सिर्फ, लेकिन हर बंदे का डिफरेंट होता है, एवरी बॉडी रिएक्ट्स डिफरेंटली, एंड समटाइम्स ऑनेस्टली कोई सिम्टम होता भी नहीं है. यू जस्ट नीड टू बी विजिलेंट अबाउट इट. कोई साइंटिफिक रीज़न नज़र नहीं आ रहा है कि क्यों बढ़ रहा है, कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं समझ आ रहा है कि पाकिस्तान एशिया में 2nd नंबर पे क्यों आ गया है व्हेन इट कम्स टू ब्रेस्ट कैंसर केसेस. कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं समझ आ रहा है कि 90,000 फीमेल्स को हर साल कैसे डायग्नोज हो रहा है एंड 40,000 मर जाती हैं उसमें से. So that's a very bad percentage, you know. And I personally feel, I'm not a doctor, I don't have a science वाला background, but मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा problem is about the shyness, is about कि ओ मैं breast के बारे में बात कैसे करूँगी. अरे बाबा, जैसे अल्लाह ने हाथ बनाया है, उंगली बनाई है, नाक बनाई है, आँख बनाई है, breast बनाई है, and by the way breast cancer बंदों को भी होता है. So इट्स जस्ट अ बायोलॉजिकल डिफरेंस. तो अगर हम थोड़ी देर के लिए इस चीज़ को इस कॉनोटेशन से निकाल के ज़रा सोच लें तो इट बिकम्स अ हेल्थ कॉनोटेशन.
सो ये सारे माइंडसेट्स या ये सारे टैबूज एंड यू नो बेटियों से बात करने की बहुत ज़रूरत है. आई एम अ डॉटर ऑफ अ यंग, माई डॉटर इज़ 11.5. आई एम अ मदर ऑफ अ वेरी यंग डॉटर. एंड जब से मैंने ये सेमिनार अलवी साहिबा का प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया और ज़्यादा एक्टिविटी हम लोगों की बढ़ गई है. So few aunties they came to me. They have the audacity to come and talk to me about it. And I shared a post on my Facebook page also. They said, why are you talking about it so openly? I said, excuse me? And they said, you have a daughter, she is 11.5. And I said, yes, so? And they said, उसके future पे बड़ा impact आ सकता है. Because they think कि genetically transfer होगा. Fine, I need to be more careful about my daughter now. That's perfectly fine. गॉड फॉरबिड ऐसा नहीं हो, बट अगर हो जाए तो मतलब मैं क्या बाकी दुनिया की बेटियों को छोड़ दूँ इस वक्त? आई कांट डू दैट. सो वट एवर आई एम डूइंग राइट नाउ, एटलीस्ट आई एम डूइंग इट फॉर माई डॉटर ऑल्सो, फॉर द सेक ऑफ माई डॉटर एंड फॉर द सेक ऑफ सो मेनी अदर डॉटर्स हु आर देयर, यू नो, एंड जिनकी माएँ उनसे बात नहीं करी हैं. सो दिस इज अगैन द सेकेंड हम्बल रिक्वेस्ट दैट आई हैव इज दैट प्लीज़ स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट. ब्रेस्ट के वर्ड को आम करने की बहुत ज़रूरत है. मतलब हम रेस्टोरेंट में जाके कहते हैं ना ब्रेस्ट पीस चाहिए. Why there are no cheeky smiles on anybody's faces, you know? लेकिन जब हम डॉक्टर पे जाने की बात करते हैं तो हमारे बाप और भाई और कज़न्स और पता नहीं सबकी गैरतें जाग जाती हैं, which is ridiculously, मतलब I don't know. And डॉक्टर साहब अभी स्टैट्स शेयर करेंगी, चीज़ें करेंगी. We will share with you examples कि कैसे लड़कियों के इलाज रुके. I have seen it. डिवोर्सेस हो जाती हैं, यहाँ कैंसर डायग्नोज, ये पेपर आया औरत के हाथ में, यहाँ मियाँ ने कहा ये लो, ये तुम्हारा वो है. एंड दिस इज़ अ लोअर SEC थिंग दैट पीपल रिलेट टू इट, दैट अ वुमन इज़ कैरेक्टरलेस इफ शी इज़ गोइंग थ्रू ब्रेस्ट कैंसर. ये लोअर SECs में है, बाय द वे. वी गो देयर. इंटीरियर सिंध, इंटीरियर पंजाब, मर्दों को ये लगता है, तो औरतें इसलिए बताने से डरती हैं. तो जब बताने से डर रही हैं तो फोर्थ स्टेज आती जा रही है. These are all the reasons. This is the society that we are living in. And हम ये अभी हंस रहे थे, बल्कि मैं नॉर्मली कहती हूँ जिस तरह ईद मिलादुन्नबी पे नात ख्वाह हूँ कि यू नो बुकिंग्स शुरू हो जाती हैं, अक्टूबर में हमारी बुकिंग्स शुरू हो जाती हैं. बट इट्स बिकॉज हम ये अक्टूबर, और हम लोगों ने अक्टूबर का मंथ तो रखा हुआ ही नहीं है, बिकॉज पूरा साल बोलना है भाई इस बारे में. 90,000 औरतें कोई मजाक नहीं है. सो सॉरी, ओवर टू यू एंड ओवर टू यू. मैं तो चुप ही नहीं होंगी ना, मेरा तो प्रॉब्लम है ये. For sharing this, it's very important, and not only we need, you know, October में ही हमें पूरे साल ये सब करना चाहिए. Though I'm a very healthy woman, but still October हुआ तो, and then I realized no, I need to go. I went to Rufina Sopro, I got myself checked. I not only got myself checked, I just got my maid checked as well. Maid was like, बाजी क्या कर रही हैं आप? और मुझे क्यों? See, this level, we need to reach out to them. So they don't know. उसको मेरे साथ जाने में इतना मुश्किल हो रही थी, and it was such a hassle for me कि मैं उसको लेके जाऊँ उसको. So it's a request from my side as well कि अपने घर में जो maids हैं उनको उनके साथ बात करें और उनको साथ लेके जाएंगे. If you are going, take them because they don't have means. And वो आपके साथ तो चली जाएंगी मगर अपने घरों में से नहीं जाएंगी. कभी भी नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं जाएंगे. थैंक यू सो मच अस्मा. No problem. वेरी इंस्पिरेशनल. यू नो, आपने जो हमें सारी बातें, यू मेक मी क्राई व्हेन आई सी योर वीडियो. इट्स रियली मेक मी क्राई. एंड मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे साथ ये मौजूद हैं और हमें इन्होंने अपनी स्टोरी बताई. हमें ऐसे लोगों से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि हम यहाँ पे ऐसे लोगों को ला के बिठाएँ जो सर्वाइवल हैं. हमारी फैमिलीज़ में, हमारे फ्रेंड्स में कोई हो सकता है जो इस चीज़ को फेस कर रहा हो. हमें उनके साथ जाके बात करनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि ये हमारे सामने एक मिसाल हैं. और यही नहीं, ऐसी बहुत सारी ख़वातीन हैं हमारे पाकिस्तान में जो सर्वाइवल्स हैं, वो बात नहीं करना चाहती हैं. सो थैंक यू सो मच अस्मा कि आपने आके बात करी. आप करती रहती हैं और आपने यहाँ आकर भी करी. थैंक यू सो मच. हम डॉक्टर कौसर से बात करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि आप क्या टिप्स देंगी लड़कियों को या जो औरतें हैं जो घरों में हैं कि वो किस तरीके से इस चीज़ के साथ अवेयर कर सकती हैं, हमें अवेयरनेस आ सकती है रिगार्डिंग दिस ब्रेस्ट कैंसर थिंग. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. और वैसे आप लोगों को मुझे अस्मा से पहले बोलने को कहना चाहिए था. वाई? बिकॉज यू नो हर स्टोरी वाज रियली टची एंड इमोशनल.
बात ये कि जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उनका ख्याल ये होता है कि यू नो एज अ डॉक्टर प्रॉब्ली वी डोंट हैव इमोशंस या फिर वी कैन नॉट इमोशनली लिंक टू समबडी, तो चीज़ें बड़ी डिफरेंट होती हैं। और कभी पेशेंट मेरे पास आते हैं, आई रियली गिव देम टाइम, आई रियली स्पीक टू देम, दे डिस्कस अबाउट देयर फैमिली इश्यूज़ और जो उनके साथ हो रहा होता है, प्लीज़ प्लस डीलिंग द डिज़ीज़ ऑल्सो। सो यू फाइंड आउट सो मच अबाउट द लाइव्स ऑफ अदर पीपल। तो कभी कभी जब पेशेंट्स को माइनर डिजीज़ होती है और वो आके रोना शुरू करते हैं तो मैं उनको कहती हूँ कि ठीक है, यू हैव दिस डिज़ीज़ बट यू आर फॉर्चुनेट इनफ कि तुम बहुत और चीज़ों को फेस नहीं कर रही हो। सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ टेबल एज अ डॉक्टर हमें बहुत कुछ दूसरों की लाइफ्स का पता चलता है और फिर आप अपनी ज़िंदगी पे भी शुक्र अदा करते हो, क्योंकि देखो एंड ऑफ द डे हम भी इंसान होते हैं और हमें भी ये होता है कि हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है, राइट। सो like once I had a patient, she was a very young woman, 35, 36. So she came, she sat down, a very educated woman, and biopsy report revealed she had cancer. So I told her, I said, look, this is the diagnosis, and she said, yeah, I do have strong family history. And she was like, I said, okay, we can conserve the breast since I'm trained in this, but ये सब कुछ हो सकता है. And quietly she stood up and she said, okay. So that was kind of surprising, क्योंकि कुछ भी हो emotionally, you know, attack होता है disease diagnosis का patient पे, and they sit down and either they show emotion, they cry, or they get upset. और बहुत से लोग ये कहते हैं कि वी रियली स्पेंड अ गुड हेल्दी लाइफस्टाइल और सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद हमें क्यों हुआ ये. तो व्हेन शी स्टूड अप आई सेड, कैन यू प्लीज़ सिट डाउन, एंड शी सैट डाउन. आई सेड, देखो, whatever I am telling you, if you have questions, ask me. Even if you have 100 questions, ask me, because I am expert in this disease. या फिर किसी ऐसे expert के पास जाओ, क्योंकि तुम मेरे ऑफिस से निकलोगी तो you are going to talk about this disease and you are going to ask your relatives or friend or whoever. Maybe they don't know about this disease. तो तुम्हें कुछ ऐसी information मिल सकती है, ऐसे ideas मिल सकते हैं जो कि तुम्हें relate ना करें और तुम्हें misguide करें. And then she sat down and she started crying. She said, you know, my husband is going through a disease. I didn't want this disease right now because he is facing renal failure और उसकी treatment और सब कुछ. तो फिर आप कहते हो कि you know, then you think about others' life. It's not only disease, there are social factors also, there is family also, they are dealing with other multiple factors as well. Like a patient comes to you who has a kid of 2 years, and you know, they think this is the end of life. और फिर अभी I'm seeing a girl who is just 32, 33, was trying to conceived 6 or 7 weeks of pregnancy and diagnosed with cancer, right? So ये इस तरह की डिज़ीज़ है. और फिर एज अ ह्यूमन, एज अ डॉक्टर, आप भी सफ़र करते हो जब आप इस तरह के पेशेंट्स देख रहे होते हो. तो अभी you know, you really feel that you should spread about this disease, you should speak about it, you should provide information wherever you can, from grassroots level to educated people to a platform where there are even doctors who don't know about the disease. जैसे मेरी एक पेशेंट थी, शुरू के दिनों में मैं आई यूज़ टू वर्क ऑन ब्रेस्ट कंजर्वेशन, आई डिड हर सर्जरी, आई डिड एवरीथिंग, एंड शी वुड ऑलवेज कम एंड शी वुड से, मुझे किसी ने कहा है कि बाहर सूरज की रोशनी में बैठो, उसकी शुआएं तुम्हारे लिए अच्छी हैं. एंड आई वाज लाइक ओके. And then one day she would come back and she was like, मुझे लोगों ने कहा कि तुम्हारा ब्रेस्ट रिमूव क्यों नहीं किया, ये बचाया क्यों है, ये तो बीमारी तुम्हारे जिस्म के अंदर रह गई है, तुम्हारी डॉक्टर ठीक नहीं है. अच्छा, then I had to explain everything. When she left, her son was in Italy and she went there, she had a chemo, radio, everything from there, and when she came back she said, I wanted to meet you again. Because wherever I went, and that was a oncoplasty technique, a real good one. So तो वो कहती कि every doctor asked me, they said, अच्छा surgery कहाँ हुई है? तो she said, मैंने कहा कि पाकिस्तान में. They said, okay, so there are surgeons in Pakistan like this who do these techniques, who use these surgeries.
So she said मेरे बेटे ने कहा तुम्हें ज़ुकाम भी होएगा तुम इसी डॉक्टर के पास जाओगी. I said okay, thank you so much for trusting me now. It's just that we don't know much about this disease. We should know about it. We should know about early disease. We should know about how can we actually take care of ourselves. Yes, we can't prevent this disease, but how can we detect this disease early? Wherever I speak, I tell them, okay, there are like, if you check on internet, if you find brochures, there are things about breast cancer जिसमें होता है कि okay, lump or nipple discharge or a skin appearance like an orange peel. So this is what I tell them, देखो ये सारी चीज़ें advance disease की है. We have to detect the disease too early if we are discussing this disease on these panels. मेरी presentation लगी भी है तो अब मैं असल में इनकी जो speech थी ना उसकी सहर में involve हो गई. I became too emotional and dramaई. So, अच्छा जी. I'm Dr. Kausar Rahman. I'm breast oncoplastic surgeon. So I deal breast cancer and do surgeries where we can conserve breast. We can give actually good aesthetic result post-surgically for cancer. Before we start, this is anatomy of breast cancer for breast for every one of us. There's chest wall. So this is anatomy. This is what we should know. पीछे chest wall है. Chest wall के आगे we have breast tissue and ductal system in the breast tissue, skin over it, and nipple areolar complex. So this disease can appear anywhere from breast tissue up to nipple. That can actually affect or invade chest wall also if it's tumor of this area. So we should know this. What is breast cancer? This is cluster of malignant cells why do we have cancer, any cancer in our body? We have a regulating system in our body which controls rapidly growing cells. So if that system is affected by any means, by DNA change, by environmental factors, by diet factors or genetic, that will actually not control overgrowth of cells and they turn or they behave like cancer tissue. So breast cell में भी यही होगा कि अगर breast cells rapidly grow कर रहे होंगे, they will form a lump, cancer, or it is rarely diagnosed in men. Less than 1% of men are also affected, as he said. I'm here, but actually this is for men awareness also. Less than 1% of men are affected. I'm dealing the second case of men breast cancer also these days within last 1 month. So though it's rare but not very rare, men should be aware of this disease also for their families, for their sisters, for their mothers, for themselves as well. Most commonly diagnosed cancer in women, leading cause of death, or an average every 2 minutes women are diagnosed with breast cancer. 1 woman die with breast cancer every 13 minutes, or death rates are declining because of screening mammograms or because of awareness programs. देखो, when we talk about causes, we actually don't know what are the causes, but we do know that there are risk factors which can cause this disease. There are certain risk factors which are not in our control. Yes, there are certain which are in our control. We can actually modify or change our lifestyle to be safe. Like early onset of periods and late menopause, of course, that's not in our control. But having pregnancy at younger age is probably in our control. क्या है कि अब हमारी लाइफस्टाइल भी चेंज हो गई है. इफ़ वी थिंक अबाउट आवर ग्रैंड मदर्स और ग्रेट ग्रैंड मदर्स, कहीं तो कुछ फैमिलीज़ में है हु हैड ब्रेस्ट कैंसर इन दोज जनरेशन्स एज वेल, बट बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ होंगी जिनमें उन जनरेशन्स में ब्रेस्ट कैंसर नहीं देखी जाती थी. वाई? बिकॉज गर्ल्स वर मैरिड एट अर्ली एज, दे हैड किड्स एट अर्लियर एज, दे हैड many kids, 6 or 7 was normal. So they used to breastfeed their children for more than 2 years. तो और
फिर उसके बाद मेन फैक्टर ये है कि जेनेटिक्स, अगर किसी की मदर को है या खाला को है या फैमिली में ओवेरियन या ब्रेस्ट कैंसर या फिर कुछ और कैंसर्स लाइक स्टमक और पैंक्रियास, वो कैंसर्स रन कर रहे हैं, तो उन लड़कियों में ब्रेस्ट कैंसर का चांस बढ़ जाता है. But as she said, and we are seeing women who don't have family history of breast cancer, but actually they are suffering of this disease. और ये प्रॉब्लम हमारी तरफ नहीं, वेस्ट में भी है कि अगर ब्रेस्ट कैंसर यंगर एज में डायग्नोज होती है, इट्स टू एग्रेसिव. बाय द टाइम पेशेंट कम्स टू डॉक्टर, it's not the fault of patient actually, it's not even your fault that you didn't even think about you, it's just that because disease is so aggressive, by the time you reach doctor it has either locally advanced or it has actually spread to your body, so you usually go in stage 3 or 4 to your doctor when you are young. Why? Because you are not enrolled into screening program. और फिर जहाँ जहाँ awareness भी programs होते तो उसमें यही कहा जाता है कि the one who's above 45 or above 50 they can have this disease, but girls are having this disease earlier than that age also. Mainly genetic हो तो फिर उनको पता भी होता. Like I know families who have ovarian and breast cancers in the family, then those girls they know actually, yes, we can have this disease. I've operated on girls who knew about this also, but ये कि by the time they come to us, tumor is actually around 3 centimeter or plus. Contraceptive pills, when we used to read about it, so this is what I said earlier also. I was surprised that how can somebody take contraceptive pills for 14 years or 12 years, because contraceptive pills less than 10 years, it doesn't cause breast cancer, years then it can cause. तो ये कि young women they do need contraceptive pills, ये नहीं कि आप लोगों ने 5-6 महीने यूजेज के बाद छोड़ दी because it can cause disease. No, but if you use it for prolonged period. But again, it's part of West. Our books they come from there. We follow literature of West. वहाँ पे ये होता है कि from Menak the girls are sexually active, उनको contraceptive pills की बहुत early age से ज़रूरत पड़ती है. हम लोगों का कल्चर डिफरेंट है, तो हमें ये कि we shouldn't stop taking contraceptive pills, but we should not take them for prolonged period. Obesity again is a factor. Vitamin D deficiency is an emerging factor which can actually we relate this to breast cancer also. तो और उसमें हम लोगों में हर कोई vitamin D deficient है, तो vitamin D और कैल्शियम रिप्लेसमेंट भी ज़रूरी है वैसे भी फॉर योर हेल्थ और फॉर दिस डिज़ीज़ ऑल्सो. प्रेजेंटेशन क्या हो सकती है? लम्प इन ब्रेस्ट, निपल डिस्चार्ज इफ़ इट्स ब्लडी, and tenderness or a lump in the armpit also, even if it's not in the breast, maybe a lump in the armpit, swelling of whole breast, appearance of skin like an orange peel, we call it periorange appearance, but this is what I said, whole breast swelling या whole breast involvement या फिर nipple retraction या फिर skin का orange peel appearance is presentation of advanced disease. We should not let this disease to go to that extent. We should diagnose or detect this disease in us or anybody else in the family who discuss this with us. They should detect this early as a small lump in the breast. So one in facts about this disease, 1 in 10 have breast cancer, obesity, age above 50, being woman is actually is actually a risk factor. Getting closer to age 50 is a risk factor. And then where can this disease spread? So we were talking about stages. Early stage, when the tumor is around 1 centimeter or very small, that is stage 1. The charm of diagnosing this disease in stage 1 is having a very good aesthetic result after surgery. Actually, no one can tell that this patient has undergone breast cancer surgery, even if you see her naked. And
Plus we do have facility of gene testing in our country. We have done it on patients. We send the block for oncotype DX gene testing, where we can tell whether this patient needs chemotherapy or not. We have had this on patients. There are lucky, fortunate patients who never had to undergo chemotherapy. They just had radiotherapy for breast conservation. Then stage 2, the disease actually spreads to lymph nodes, which are the nodes in the armpit, which actually drain the area of our arm and breast. So if disease goes to axillary nodes or armpit nodes, then that patient does need chemotherapy. But again, we can conserve the breast in those patients as well. In stage 3, tumor is actually big. It has actually spread to lymph nodes. 4, the disease has spread to whole body, either lung, liver, bones or brain. So that is the disease which we call advanced disease. Patients come to our clinic and they ask like, which stage are we, or which stage is our mother having this disease? This is what I'll tell them. Dekho, if it's stage 1, we need to find out if our patient is stage 1. फ़ायदा ये होगा कि आपको कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, but for that we have to do certain other tests. या फिर stage 4, where as a surgeon then I can't play any role, then I have to refer my patient to oncologist. Stage 2 and 3 are important for doctor, for surgeon to find out what to do, what to plan from surgical point of view or from treatment management point of view. Next. This is where I said this disease can spread to liver, lung, bone and brain, and I've seen a woman, a very educated woman with the brain mets. I've seen a woman who works in hospital actually at a good position with locally advanced disease, where she thinks, you know, she never found out because the lesion was in the lower part of breast, and if you have little bit heavy breast, so you actually don't feel the lower part. So while taking shower, we will come to that slide later of self-examination. There is no science in self-examination. You should be breast aware. What can we do to prevent this disease? That is an early detection plan, self-examination, regular clinic checkups and screening mammogram. How do we examine ourselves? This is what I tell everyone. If I go somewhere to talk about this disease or I spread awareness, this is what I tell them. There's no science. Don't follow the brochures. Don't, which are on internet or which are given that look at yourself in front of mirror, lie down and examine yourself, then stand up and examine yourself. Dekho, as she said, and this is, I think, what I do as well. This is what all of us we do. If we have to take out time for ourselves, we never do this. Vitamin D, I've kept vitamin D injection in my clinic so that whoever comes to my clinic and I find out she's vitamin D deficient, I just inject them. Why? Because I bought vitamin D capsules, I kept them in my fridge. I will never come to you. I'm scared of See, I never wanted to have capsules, and we actually throw them in the garbage. Then I thought, okay, I kept vitamin D injection in my pocket. This is not a story. Actually I've done this. I kept vitamin D injection in my pocket, and I thought, okay, whenever I go to OT and my nurse can, you know, do this, I can have vitamin D injection. Being doctor, I myself, I'm phobic to injections, so I really don't like injections. So अच्छा तो उसमें ये होता था कि I thought, okay, maybe tomorrow, and for a month I never had vitamin D injection. Then I said, okay, I should keep this for my patients. Whoever comes to my clinic, she should get vitamin D injection, because we cannot make decision to have something specifically or specially for ourselves. Self examination भी इस तरह की चीज़ है. If you think that we have to take out time, we never. So while taking shower, there's no science in it. Once a month after your periods finish, just while taking shower, examine your breast, the whole breast and armpit. ठीक,
उसमें वैसे भी आप बॉडी स्क्रब कर रहे होते हो, एक बार हाथ अपने ब्रेस्ट पे फेर लें और आर्मपिट में, तो आपको पता चलेगा। उसमें एक और ये चीज़ होगी, यू विल हैव द फील ऑफ योर ब्रेस्ट इन योर ब्रेन। छोटी सी भी चेंज can alarm you, can tell you to go to doctor. I've seen patients with heavy breast detecting a tumor of less than 1 centimeter, which actually at times surprises us also, because at times we can't even do that. At times tumors less than 1 centimeter are not detected on mammogram also, but there are women who are too vigilant and who come to us. Self examination के बाद mammogram is एक्सरे ऑफ ब्रेस्ट। पीछे की स्लाइड, इससे पीछे की स्लाइड। मैमोग्राम से बहुत सी औरतों को डर लगता है, दिस इज़ व्हाट दे थिंक इफ़ वी गो दिस इज़ अ पेनफुल प्रोसीजर, और मैमोग्राम compresses your breast, it's painful, yes it does compress, but it's not that painful. If you look at the benefits of mammogram, I think वो थोड़ी देर का discomfort is really okay to bear, and have something which could be too early. Even if something is cooking in your breast, you can actually detect the disease. Even if when you don't feel a lump in your breast, you can detect that disease on mammogram. Next, less than 35-year age, ultrasound is beneficial. Sound waves होती हैं, they are not harmful to body. Even mammogram rays are not harmful for our body. Okay, we don't know. There are girls who are sent to radiology by their gynecologist or by their physician, or maybe even by their surgeons also. Even if they are younger than 35, they are sent for mammogram. और फिर जब हमारे पास आते हैं, या फिर रेडियोलॉजी वाले ही they refuse to take them, और फिर they come back to us और वो कहते हैं कि उन्होंने हमारा मैमोग्राम नहीं किया, though we were recommended to have this. ये नहीं कि हम मैमोग्राम really harmful under the age of 35, it's just that mammogram is not beneficial under the age of 35. The young women, they have dense breast appears white against black background, और कैंसर या फिर लंप या फिर कोई भी डिज़ीज़ अगर हमें देखनी होती है that appears white against grey और black background, तो वो नज़र ही नहीं आता, इसलिए उसका फ़ायदा ही नहीं आपको। तभी आपको कहा जाता है कि आप मैमोग्राम ना कराएं बल्कि अल्ट्रासाउंड कराएं इन अ यंगर ब्रेस्ट। ओके, नेक्स्ट, सो दिस इज़ व्हाट वी सेड, examining yourself, mammogram and screening mammogram. Okay, so do you have to go for screening mammogram or I have to go for screening mammogram? No, these are women who are closer to age 50, who have felt nothing in their breast, but since they are at risk of having this disease, they should book their screening mammogram. In West, they get letters from their relevant hospitals, and they are booked for their mammogram. हमारी तरफ ये कि we are spreading this awareness. जो भी हो आपकी फैमिली में, your aunt, your mother, your neighbor, whoever you know, your senior colleagues who are closer to age 50, they should schedule their mammogram. They should go and get a screening mammogram done. I end up here, and I can take questions if anybody has. मैं बैठ जाती हूँ. Before taking questions, can I just Thank you add so a few much. things? Yeah. The cultural and society part that I wanted to talk about. Yes, we should clap for Dr. Saab first. You know, these are all the, I think whenever I go through this presentation with Dr. Saab, I just really, and thoroughly enjoy it, because बहुत डिटेल में, बहुत आराम से हमने सारी चीज़ें बताई हुई हैं. We have a lot of males in the background. वो सारे ज़रा इधर attention करें मेरी तरफ. We have a lot of males in the background. So सारे ज़रा आगे आ जाएं. मोइज़ आगे आ जाओ. I need attention of all the males जो काउंट कर रहे हैं कि कितने लोगों की चाय करनी है और सब कुछ करना है, वो सब भी आगे आ जाएं. प्रॉब्लम ये है दैट सारी चीज़ें हैं, हम बात कर रहे थे, फियर है, औरतें इवन डॉक्टरों के पास जाके भाग जाती हैं. पेशेंट्स आते हैं,
एक आपकी ले जाते हैं और फिर कभी नहीं आते हैं. Now, in their back stories are completely different. Those are society ke pressures. Those are not scientific pressures. We have a marvelous system when it comes to, you know, treating a patient, you know, cancer patient. यहाँ पे हमारे सब डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, सब हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे हैं, गरीब अमीर सबके लिए हमारे लिए इलाज की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं. इट्स जस्ट दिस दैट यू नीड टू फाइंड आउट. बाहर के हालात से बहुत बेहतर हैं हमारे. आई हैड दिस ऑप्शन ऑफ गोइंग अब्रॉड बट आई ऑप्टेड फॉर पाकिस्तान एंड आई ऑप्टेड फॉर, यू नो, स्टेइंग हियर. प्रॉब्लम्स बहुत सारी आ रही हैं कि आपके घरों की जो मर्दों की एक्सेप्टेंस है वो बहुत कम होती जा रही है. एंड मैं पढ़े लिखे घरों की भी बात बता रही हूँ. इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द लोअर SECs. एंड मेरे साथ पेशेंट थी जो कि बहुत एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती थी. एंड उसके पेरेंट्स की वो मेरे साथ कीमो वाले बेड पे थी. एंड ये बिल्कुल मेरी अपनी फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. एंड उस वक्त मुझे लगता था कि मैं तो बहुत ही प्रिविलेज हूँ, कीमो लग रही है तो क्या हुआ, यू नो, बिकॉज उसको जिस दिन डायग्नोज हुआ उसके हस्बैंड ने उसे डिवोर्स दे दी. उसके पेरेंट्स नहीं थे, उसके भाई और भाभी ने उसे रिजेक्ट कर दिया बिकॉज उन्हें लगा कि उनके बच्चों को ये बीमारी लग जाएगी. लेकिन वो इतनी कोई रिजिलियंट और बहादुर लड़की थी. आई स्टिल नो हर, आई नो शी इज़ माशाल्लाह अलाइव एंड शी इज़ डूइंग गुड. और उसका उस वक्त एक 7 महीने का डॉक्टर साहब बच्चा भी था. सो मियाँ साहब तो छोड़ छाड़ के ना चले गए. उन्होंने कहा कि जो करना है ये खुद करेगी. शी वॉज अ रिजिलियंट वुमन. शी फॉट विद इट. शी इज़ फाइन अल्हम्दुलिल्लाह. शी इज़ सर्वाइविंग. शी इज़ डूइंग अ जॉब. सब चीज़ें हो रही हैं. बट पॉइंट ये है कि who has given the right to all the men, with all due respect to the, you know, males like you who are supporting females like us. And यहाँ पे जितने लोग खड़े हुए हैं, हो सकता है आप लोग घरों पे जाके बहुत सपोर्ट करते हो, बट हम में से ही वो मर्द हैं जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. We need to find out, we need to talk about them, we need to, and ये सब बंदे कर सकते हैं. औरतें कुछ भी कहती रहेंगी, मर्दों को शायद समझ नहीं आने वाला है. बंदा जब बंदे से बात करता है, that's a separate thing, you know. एंड सिंस लास्ट ईयर, यू नो, हम हर जगह बात कर रहे होते हैं जाने की कि जी वो औरतों के साथ हम सेशन करते हैं. मैं कहती हूँ बंदों को भी बुलाओ. आई नीड टू टॉक टू देम बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज देयर माइंड सेट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल देम कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़ फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि दिस इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ. दिस इज़ नॉट अ जोक. एंड आप देन देयर वाज अनदर पेशेंट. उसके अब्बा ने उनको वापस बुला लिया घर क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी ब्रेस्ट बेटी शादीशुदा नहीं है, उसका इलाज डॉक्टर, लेडी डॉक्टर्स हैं, सारी चीज़ें हैं. एंड सीरियसली हम लोग अपने रिलीजन को बहुत मिसयूज़ करते हैं. आई एम सेइंग इट ऑन दिस प्लेटफॉर्म. वी हैव अ ब्यूटिफुल रिलीजन. वी हैव अ, हमारे रिलीजन में कहीं किस जगह मना है आपकी हेल्थ का ख्याल ना रखा जाए. मेरे हिसाब से आपकी ज़िंदगी जो है दैट्स अ गिफ्ट ऑफ अल्लाह. दैट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड. अल्लाह ने आपकी ज़िंदगी को एक नेमत की तरह करार दिया है और अल्लाह ने कहा है कि आपको अपनी हर नेमत का शुक्राना करना है. और सेहत का शुक्राना ये है दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ दैट. एंड इफ़ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ दैट देन आई एम वेरी सॉरी हूएवर सेज दैट कि जी छाती का इलाज कराने लड़की चली जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ये तो रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है. दैट्स 100% इनकरेक्ट. देयर इज़ नो रिलीजन इन्वॉल्व इन इट. देयर इज़ नथिंग लाइक इट. कोई रिलीजन का वास्ता दे रहा है कोई. देन वी मीट अ लॉट ऑफ फीमेल्स एंड कुछ फीमेल्स आती है रोती धोती कि जी हम तो इलाज नहीं करा रहे क्योंकि हमारी तो सास ये कह रही है या हमारे तो मियाँ ने हमें छोड़ देना है. ऑनेस्टली उस पॉइंट पे मैं उन औरतों को कहती हूँ कि जिस मियाँ ने छोड़ देना है तुम ऐसा करो पहले ही छोड़ दो. बिकॉज इफ़ ही हैज़ नो रिस्पेक्ट फॉर योर लाइफ जस्ट लीव हिम. ही इज़ नो गुड फॉर यू. So it's all a matter of acceptance. It's all a matter of, you know, acceptability, and it's all a matter of understanding कि this is not a joke. मैं उस दिन IBA में गई with a very, you know, ये मेरे लिए बड़ी painful बात है. I scolded the boys, the young boys, because when I started talking about breast, I went there as a motivational speaker. So एक अजीब सा giggle आया वहाँ पे, and I said, excuse me, who giggled in the boardroom? I started acting like a teacher over there. ऐसे तुम लोगों को मजाक लग रही है ये बात. Ask me when I was on the hospital bed. Ask me जिस वक्त मेरी 2 सर्जरीज हुई. Ask me जिस वक्त मुझे कीमो लगा रहा था उस वक्त तुम आके ज़रा गिगल करते ना वहाँ पे. So if you think that, you know, घर पे मदर्स हैं, अम्मियाँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, एंड ये जितने यहाँ पढ़े लिखे लड़के खड़े हैं, मैं ऑनेस्टली मैं हाथ जोड़ के तुम लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ जो तुम लोगों की सराउंडिंग्स में लड़के हैं, start talking to the boys also. Because there's a lot of talkability now in the females. हम लोग बहुत दिन से मैं तो कम से कम 4 साल हो गए हैं अब ये काम करते हुए. 2 साल से आई एम पार्ट ऑफ दिस ग्रुप
एंड हमने इन 4 सालों में तब्दीली देखी है, औरतें बहुत रिसेप्टिव हो रही हैं, दे वांट टू टॉक अबाउट इट, दे वांट टू लर्न अबाउट इट. आई थिंक द ऑब्स्टिकल विच इज़ कमिंग इज़ the male का attitude, is the rejection of the families, is the rejection कि जिस वक्त आप औरत को डंप करके बर्तन अलग करके घर में बिठा देते हैं, या आप उसके कैरेक्टर लेस होने की बात उससे, या जब वो मर रही हो तो लोग आके कहते हैं बेटा इस्तग़फ़ार पढ़ो, अल्लाह ने किसी गुनाह की सज़ा दी होगी, उस वक्त दिल करता है कि यू जस्ट वांट टू किल दोज पीपल, यू नो. बट वी नीड टू चेंज एज अ सोसाइटी, वी नीड टू चेंज दिस माइंडसेट, एंड आई नो इट विल नॉट चेंज इन वन डे, but I just promise myself every day that I will keep on talking about this thing. जिस दिन मुझे ये नहीं लगेगा कि हाँ कोई 50 बंदे भी मुझे नज़र आ रहे हैं जो मेरी हाँ में हाँ मिला रहे हैं. सर अभी तक मुझे 50 की गैदरिंग नहीं मिली है, सो मैं एटलीस्ट 50 का एम तो इतना बड़ा नहीं है, वो 50 मुझे लगता है कि वो मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस इज़ अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू हु सिटिंग हेयर राइट नाउ. इट इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ. 40,000 females dying every year means 40,000 households getting affected. किसी के बच्चे होंगे, किसी का भाई उस पर डिपेंडेंट होगा, किसी का मियाँ उस पर डिपेंडेंट होगा, किसी की माँ उस पर डिपेंडेंट होगी. We are not thinking about those things. What we are thinking about is only the societal taboos. We are only thinking about कि अच्छा हाँ ये लड़की अच्छी थी, बुरी थी, इसको गुनाह की सज़ा मिली है, नहीं मिली है, इसको किस तरह रिजेक्ट करना है. एंड फाइनली ऑन द लास्ट नोट, अगर एक औरत गंजी हो जाती है, प्लीज़ स्टॉप लुकिंग एट देम कि जैसे वो कोई एलियन है. प्लीज़. Sorry, I didn't notice that. I'm so sorry. But you know, when जिस वक्त मेरे कीमो हुआ तो the first question, because I was very finicky about my, and I'm still very finicky about my hair. So मेरी सर्जरी भी हो रही थी और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं उससे रात को भी एक दिन पहले मैं ब्लो ड्राई कराने चली गई, बिकॉज मैंने कहा अगर मैं बच के आ गई सर्जरी से तो मेरे से लोग मिल आएंगे तो एटलीस्ट बाल सही होने चाहिए. सो यू नो दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन. लोग समझ रहे थे इसके दिमाग पे कैंसर का असर हो गया है. एक्चुअली इट वाज नॉट. आई वाज जस्ट ट्राइंग टू नम माई सेल्फ विद ऑल दोज थिंग्स. सो यू नो फॉर अ पर्सन लाइक मी जिसका, एंड हर औरत के लिए यू नो, बाल एंड ब्रेस्ट इटसेल्फ, लूजिंग अ ब्रेस्ट, बालों का लूज़ करना, इट्स नॉट दैट ईजी. इट्स नॉट दैट ईजी कि मैं यहाँ आके बैठी हुई हूँ. एक बहुत टफ टाइम है जिसने यहाँ ला के बिठाया और इतनी हिम्मत दे दी है कि मैं इतनी ओपनली मैं बात कर रही हूँ इस बारे में. बिकॉज आई सीरियसली गिव अ डैम अबाउट एनी थिंग नाउ. हुएवर थिंग्स व्हाटएवर, जस्ट लेट देम डू दैट, बिकॉज आई नो व्हाट आई एम डूइंग एंड आई नो व्हाट आई एम डूइंग इज़ राइट. सो जब मैंने डॉक्टर से पूछा, उन्होंने कहा 14th डे फर्स्ट कीमो के बाद बाल जाएंगे. सो आई हैड दिस लॉन्ग, तकरीबन दिस लॉन्ग हेयर. सो व्हाट आई डिड, अपनी पहली कीमो के बाद मैंने उन्हें सबसे पहले चॉप करवाया. मैंने उनको स्ट्रेट चॉप कराया, डोनेटेड द हेयर. आई नो समबडी जिसको मैंने डोनेट किए. एंड उसके बाद 14th डे मेरे बाल जाना शुरू हो गए. एंड आई वाज टेकिंग बाथ एंड इस तरह से मेरे हाथों में पूरी लट आई है. एंड आई वाज लाइक ओह शिट, ये तो होना शुरू हो गया. आई केम आउट ऑफ द रेस्ट रूम. आई टोल्ड माई हस्बैंड, आई वाज लाइक मैं गाड़ी की चाबी लेके जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू द सैलून ऑफ माई फ्रेंड एंड आई एम गेटिंग इट शेव्ड. आई गो, आई फाइन. मैं चली गई. आई वेंट देयर, आई गॉट इट शेव्ड. I came out of the salon just like you. I was there, you know. And you look good, by the way. Yeah, I know. मैं सोच रही हूँ मैं दोबारा कुछ ऐसा शुरू करूँ काम. मैं बाहर आई हूँ. I was honestly, मैं जिस वक्त मेरे बाल मेरी फ्रेंड शेव कर रही थी, she was crying because पिछले 17 साल 18 साल जब से हम बड़े हुए हैं, मेरे बालों की स्ट्रीक्स एंड ब्लो ड्राइज एंड ऑल दोज थिंग्स सब वो करती थी. सो यू नो शेव करना उसके लिए बहुत प्रॉब्लम था. बट आई वॉज लाफिंग and I was like, don't cry, don't put me into that situation where I will start crying and I will get demotivated. I don't want to go into any demotivated zone. So मैं बड़े confidently मैं बाहर निकली हूँ. गाड़ी की मैंने चाबी खोली है and बुखारी पे ही है उसका वो, मतलब लोगों ने मुझे ऐसे देखना शुरू किया कि I got so uncomfortable with myself. मैंने बड़ा पुश किया अपने आप को, 3 कीमोज 2.5 कीमोज, लेकिन मुझे I cannot cover my head. It's a good thing, it's a bad thing, I don't know. I still don't cover my head. But people pushed me to do that. Because जब मैं घर से निकलती थी, मुझे ऐसे देखते थे जैसे कोई एलियन बाहर निकल. So patient acceptability of because जिस वक्त कीमो लग रही होती है ना, उस वक्त only maybe a doctor knows or the patient knows कि आपको जितनी गर्मी लग रही होती है उस वक्त आपका दिल करता है कि आप बस आप किसी को हाथ लगाएंगे और वो बर्न हो जाएगा. यू नो, इट्स दैट बैड. सो डू नॉट पुश द पेशेंट्स. हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये भी है कि हमारा पेशेंट सपोर्ट सिस्टम इज़ वेरी रॉन्ग. सो एक तो प्लीज़ अगर कोई औरत इस तरह से गो थ्रू करी हो, प्लीज़ उसको मोटिवेट करो. उसको जाके ना कहो कि
पता नहीं बेचारी के साथ अब क्या होगा, बिकॉज आई हैव हर्ड दैट, आई हैव हर्ड पीपल सेइंग कि अब पता नहीं कितने दिन की बात रह गई है। ओ प्लीज़ फॉर गॉड सेक, माई डेथ एंड माई लाइफ ओनली अल्लाह नोज। आपको क्या पता, आप बाहर जाएंगे आपको गाड़ी मार के चली जाएगी। हाउ डेयर यू कैन से दिस टू मी, अ पर्सन हु इज़ डाइंग, हु इज़ फाइटिंग, हु इज़ ट्राइंग टू डू समथिंग गुड विद द लाइफ, जिसके छोटे छोटे 2 बच्चे सामने घूम रहे हैं और आप आके से बात कर रहे हैं। जस्ट बिकम मोर एम्पैथेटिक विद पीपल, जस्ट बिकम मोर एक्सेप्टेबल फॉर फीमेल्स। आप बाहर कहीं जाएँ तो आपको अगर इस तरह के पेशेंट कोई नज़र आ जाता है तो लोगों का एक बड़ा डिफरेंट एटीट्यूड होता है, दे टेक केयर ऑफ देम, वो उन्हें एलियनेट नहीं करते हैं, हमारे यहाँ एलियनेट करते हैं। सो प्लीज़ ये एक्सेप्टेबिलिटी भी ज़रूरी है, बिकॉज जब आपका ब्रेस्ट कैंसर का रेट बढ़ रहा है तो इस तरह की बहुत सारी गंजी औरतें भी आपको नज़र आने वाली हैं, शायद मज़ीद आने वाली हैं। मूव अराउंड नॉर्मली लाइक अ नॉर्मल वुमन, क्योंकि मुझे लगता है कि जब एक दफ़ा औरत ट्रीटमेंट में आ गई है, अगैन लाइफ एंड डेथ इज़ इन द हैंड्स ऑफ अल्लाह, वी डोंट नो अबाउट। लेकिन एक बंदा जो इस प्रोसेस से गुजर रहा है और लड़ रहा है हिम्मत से, उसकी हिम्मत बने, ना कि उसको आप रिजेक्ट करके कोने पे डालें। एंड टू ऑल द मेल्स वंस अगेन, प्लीज़ गो बैक एंड टॉक टू योर वाइफ्स, योर सिस्टर्स, टॉक टू योर सिस्टर्स, टू टॉक टू योर मदर्स ऑल्सो, जो अपने घरों में बंद होके बैठी हुई हैं, एंड जो आपके सराउंडिंग्स में चाहे ड्राइवर्स हैं, चाहे माली है, बिकॉज अभी एक माली का केस हुआ है, फ़ायज़ा एंड दीज पीपल, वो उनके माली आए थे, उन्होंने कहा कि मेरी भाभी को हुआ है, ससुर नहीं जाने दे रहे हैं। तो वी कन्विंस द फादर, उनको बुला के जिस तरह से फिर समझाया गया है और बताया गया, वो हमारी टीम के कुछ मेंबर्स हैं, उनको पता है। सो इवन अगैन मर्दों में भी जो आपके इर्द गिर्द लोअर एसएससी के लोग हैं, उनसे बात करने की ज़रूरत है, जो आज हमने बताया है उसको स्प्रेड करने की ज़रूरत है, एंड आई थिंक एक्सेप्टेबिलिटी की ज़रूरत है। थैंक यू। थैंक यू सो मच अस्मा, आपका यहाँ आने का। बोलने नहीं देंगे। ऑफ कोर्स, मुझे बिल्कुल नहीं बोलने दिया। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर कौसर आपका आने का। एंड ये सब जो लोग मैं बल्कि पूछना चाहूँगी, अगर ऑडियंस में से कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं, यू कैन आस्क देम प्लीज़। यस, फर्स्ट कि ब्रेस्ट फीडिंग क्या प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर। सेकंड ये कि मैंने क्वेश्चन मतलब डॉक्टर से किया था कि क्या पीसीओएस जो है कॉज कर ब्रेस्ट कैंसर। थर्ड ये कि आजकल जो चिकन का तो कहते हैं कि हार्मोन और स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं जो नॉन रेगुलर चिकन होती है, क्या इनसे भी हो सकता है? ब्रेस्ट फीडिंग का ये कि यस प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर, लेकिन इफ़ यू एक्सक्लूसिवली फीड फॉर 12 इयर्स, इसका मतलब कि 6 बच्चे हों और उनको आपने एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड किया हो, देन इट्स अ प्रोटेक्टिव फैक्टर। लेकिन देखो, देन वी कैन नॉट इवन स्टॉप फीडिंग आवर ओनली वन चाइल्ड। और दिस इज़ व्हाट आई सेड, आवर लाइफ स्टाइल्स हैव चेंज्ड। वी डू नॉट गेट मैरिड एट अर्लियर एज बिकॉज वी आर एम्बिशियस, वी वांट टू वर्क। दूसरा, वी कैन नॉट अफोर्ड चिल्ड्रन मोर देन 2 or 3, और स्पेशली इफ़ यू आर अ वर्किंग गर्ल और वुमन, देन यू डू गो टू वर्क ऑल्सो। तो फिर वो ब्रेस्ट फीडिंग का सारा आपका साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। बट येस, दैट इज़ प्रोटेक्टिव। दूसरा आपने कहा पीसीओज़ एक तरह से लड़कियों के लिए प्रॉब्लम होती है, ये कि वो शादी के बाद कंसीव करने में प्रॉब्लम होता है, बट पीसीओ इज़ प्रोटेक्टिव बिकॉज यू आर नॉट एक्सपोज टू ईस्ट्रोजन फॉर अ लॉन्गर पीरियड। तो एक तरह से अगेन इट्स प्रोटेक्टिव। और मुझसे अभी पिछले दिनों एक प्रेजेंटेशन थी मेरी क्लिनिक पे भी, जब लड़कियां आती हैं पीसीओज़ में ये होता है कि साइकिल्स आर डिस्टर्ब्ड, तो वो हर मंथ नॉर्मल रेगुलर साइकिल के बजाय 2 या 3 महीने पे पीरियड्स आते हैं, एंड देन दे गो टू गायनेकोलॉजिस्ट। सो गायनेकोलॉजिस्ट उनको हार्मोन्स पे रखती हैं फॉर फ्यू मंथ्स, दे आर ओके, एंड देन द प्रॉब्लम रीस्टार्ट्स। मैं उनको कहती हूँ, देखो जब शादी होगी, जब कंसीव करने का प्रॉब्लम होगा, तब टेक हार्मोन्स। अब अगर 1 महीने का ऑलवेज़ बचता है तो उसमें क्या परेशानी है तुम्हें? सो दैट्स 1-2 महीने अगर पीरियड ना आए तो कोई परेशानी नहीं, देन इट्स फ्रॉम आवर एस्पेक्ट इट्स प्रोटेक्टिव। थर्ड आपने कहा चिकन, यस देखो फिर वही फूड जो हम सब यही कहते हैं कि हमारी फैमिली में कोई हिस्ट्री नहीं, लेकिन यंग लड़कियां, और मैं तो जिस तरह से आई एम सीइंग वेरी अनयूजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इन यंग वुमेन, जिसमें you cannot even detect the thing on mammogram and they come with advanced disease.
उसमें ये कि एक तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स प्लस जो फूड में डिस्टर्बेंस है। आपका चिकन इसी तरह से इंजेक्टेड है, आपका काउस में हार्मोन इंजेक्शन है, आपका सारा फूड अफेक्टेड है। आप लेकिन आप मजबूर हैं कि आप you have to use that chicken, you are bound to have the milk of those cows or whatever, तो उसको भी हम चेंज नहीं कर सकते, but yes that does cause. So we can avoid chicken, right? It is said to avoid I'm chicken. not eating chicken from 4 years, so तो हमें फिर से this is what I think, you know, I think about my daughter. So the lifestyle I had where I grew up, we really had pure, everything pure, because my father was a landlord. So हमारे vegetables we had them from our farms, fruits from our farms, chicken clean, meat was cut in front of us, or milk was from the house because my mother loved having cows, तो दूध भी घर का, everything was pure. When I think of my daughter, nothing pure, then I start thinking of going to that primitive lifestyle. उसके लिए फिर आपको farms अपने बनाने पड़ेंगे, है ना? तो then I asked my driver, okay, find out chicken for me, जो कि ये जो जिनको जो भी कहते हैं फार्मी या मशीनी या जो भी जो कि इंजेक्टेड हैं, we couldn't. Even from villages we couldn't find those chicken. I said okay, I'll make nuggets of those chicken for my daughter. तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा for diet. I think don't deprive yourself. Just Don't deprive yourself. Yes. try to balance out and whatever. I you would do. chicken, but the desi one. Desi one, find it, huh? Yeah. You will find it from somewhere. So I have a question. If a woman finds a lump in her body and the doctor says that it's... pass the mic. I'm really sorry to cut, but just take the mic so that we can have that. And I'm sorry guys, we're really short on time, so we'll just try to keep this a little bit quick so all the questions can also Chal. be answered. Yeah, so Okay, so I just have one question. And if a girl finds a lump in her breast and the doctor says that it's non-cancerous, so then what should they do about it? Should they let it go or... देखो, lumps of younger breast, fibroadenomas are lumps of younger breast, 16 to 26 year of age, you can have those lumps. Each cycle your breast tissue matures and it undergoes maturity. You do develop those lumps. They are non-cancerous. They do not convert into cancer, but at certain age there is recommendation above 35 you can't keep even something which is harmless. तो younger जब patient हमारे पास आती हैं, if she is 16, 17, 20 or 25, if the lumps are small, we ask them not to touch them. But when they come at the age 30 plus, तो फिर उसमें यही होता है, हम उसको कहते हैं देखो, of course someday you will plan surgery, then why tomorrow, just get rid of it today. एक दूसरा, if she didn't have lump under the age of 26 and she developed something at age 30 or 32, इसका मतलब there is a change in breast tissue, even if it's harmless, even if it's non-cancerous, don't keep it. Then it's something which is pre-cancerous. I have a question. So first of all of them wanted to know about earlier signs and like first few symptoms kya hote hain, and then a guy asked me what is the difference between symptoms of a female and a man, are they the same or is it something different? देखो, this is what I said, lump in breast, lump in armpit, bloody discharge from nipple, these are early signs. And if we talk about nipple retraction or swollen skin, pudiorange appearance of skin, or a huge lump in the breast, these are presentations of advanced disease. So here, this is what I tell you, if you want to detect a disease early, if you feel a small lump in your breast, you should go to doctor. If you feel a small lump in your armpit, do go to doctor. Watery discharge is not harmful. Milky discharge from nipple is not harmful, but bloody discharge from nipple, that should be evaluated. Men or boys, if they feel a lump, they do feel a lump because they have nothing, chest wall and skin, and underneath areolar complex they have a very small disc of breast tissue, they do have. In that tissue they do develop lumps and they can detect it earlier than women because it's really obvious when they feel themselves.
And as I said, I am dealing with patients. I deal with gynecomastia also. Somebody asked me, he said, okay, I have to refer some boy. Do you deal with gynecomastia? I said, yes, that is a swelling of breast tissue in boys. I said, yes, I've dealt, and you know, the patient who come to me, they are from a real high profile, so they come with the guards or with family or somebody. So people think that they come with the family or they bring sisters or mother. Actually, the boys come for treatment to me, and the way we deal men also, they do feel lumps in the breast. So next question. So I see this on my blog. Someone is asking, what are the chances of getting breast cancer again if someone has gone through radiation and chemotherapy? So are there any chances कि ये वापस आ सकता है? Yeah. Breast cancer, if it's diagnosed in a patient who even have no history of breast cancer in the family, they do have chances of developing breast cancer in the other breast, or maybe in the body as well. First 2 years, we keep our patients in close contact. We as a breast surgeon or oncologist, they see the patient every 3 months. Then next year on 6 monthly basis, then after 1 year yearly basis. So after 2 years, the chances of recurrence, they reduce, but there are chances of recurrence of disease again in those patients. So then we yearly see that patient till 5 years. After 5 years, the chances really regress, but not necessarily that every patient should have this disease recurrence, but yes, book says that there is chance of recurrence of disease in the contralateral breast or in the same breast or in any part of body. Okay guys, so due to the shortage of time, we're going to take 2 more questions, and then if anyone has any other questions, they can come up to Dr. Kausar for like a little bit and ask her advice while we're all still here. Okay, I got a question from a mother. She said that how can we take care, how can we prevent it? And is it happen because of irregular sleep and bad diet that cancer causes because of that? Dekho, any disease, any cancer, not even breast cancer, could be because of disturbed diet and disturbed sleep and disturbed mental activity, जिसमें depression, anxiety और ये सारी चीज़ें आती हैं. So improve your diet, exercise, and proper sleep. Yes, that does affect your life. Not even for breast cancer, for other diseases also. Dusra, how can we prevent the disease? We actually cannot prevent the disease. We can improve our lifestyle, but we can take measures to early detect the disease. That is like having self-examination, or if you find something, then go to doctor. If you are closer to age 50 or 45, have screening mammograms or get yourself scanned. And if there is family history of breast cancer, get your genetic testing done. It is possible in our country also. Okay, someone is asking. I'm not the best person for Desi Totka, but yes, there are Totkas. You know, there are patients who come to me, and I've seen a patient who really was glowing after treatment because she was gene negative and she didn't need chemotherapy. I conserved her breast also. And then when she came back, she was looking very good, and she said, I found out this juice and this juice and this thing works for me. They have to find it on internet, or somebody who is herbalist, they can tell. Thank you so much all of you for coming today and joining us. Thank you so much Dr. Kausar for coming and giving us so much information about this breast cancer awareness. Thank you so much Asma Rabi for coming, and thank you so much Humayun Farooq for attending this and giving me so much inspiring speech today. Thank you everyone, and आप लोगों के पास अगर कुछ और सवाल हैं जो आप इन लोगों से पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं during the tea. Thank you.